हेलो एवरीवन, दिस इज शत्रुपा एंड वेलकम बैक टू कैंपसमॉन्क। एंड आज जो मैं लेके आई हूँ इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही नया चीज़ है क्योंकि अभी केप जेमिनी का एग्ज़ाम है राउंड द कॉर्नर। सो वी नीड टू नो कि उसके प्रोसेसेस कैसे हैं, हाउ वी शुड प्रिपेयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टेक्निकल सूडो कोड, राइट। तो टेक्निकल सूडो कोड जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर केप जेमिनी क्योंकि ये उसका पहला राउंड है। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड जिसको बिना क्लियर किए आप आगे के राउंड में क्वालिफाई नहीं करोगे, बिकॉज केप जेमिनी अभी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहले सूडो कोड को क्लियर करो, देन यू गिव अ वर्बल टेस्ट, यू क्लियर दैट, देन गेम बेस्ड टेस्ट उसको क्लियर करो, उसके बाद आपको एक कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा, यू क्लियर दैट, then you get a chance to get yourself interviewed for the technical round. So the first round, that is the pseudocode round, is a very important round. So from that point of view आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, what are the important topics. But before that we need to know कि total questions जो आते हैं, it is 25 question giving you 25 minutes. That means exact 1 minute per question at max that you can afford. एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा अफोर्ड करते हो तो किसी और क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से कम टाइम में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। बट एट द सेम टाइम ये भी समझ लो कि क्वेश्चन इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते कि आप 1 मिनट में सॉल्व ना कर पाओ. इट्स somewhat kind of a smart work along with hard work that you have to manage, ठीक है, because the questions will be 25, it will be too much, but आपको टाइम भी उतना ही मिलेगा 25 मिनट, ना कि उससे ज़्यादा ना ही उससे कम. सो यू हैव टू मैनेज, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग फैक्टर व्हेन दैट कम्स टू एग्जैक्ट 1 मिनट ऑफ टाइमिंग, राइट, क्योंकि आपको आगे के क्वेश्चंस पता नहीं है. सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. उसके बाद आते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पढ़े, व्हाट टू स्टडी, राइट. सो देर आर सर्टेन एरियाज ऑन विच केप जेमिनी फोकसेस, ठीक है. वो किसी साल उसका अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बेस कर देता है ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रिंग्स. sometime it is completely on data structure networking, sometime on generic code, on pseudo code, different area से it selects question. और हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है. every year it is one particular topic that it chooses. ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता कि लास्ट ईयर डेटा स्ट्रक्चर पूछा था इस साल नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बिन एम्बेडेड इनटू दिस एग्जाम. So starting with what are the topics that you should start with, पहला तो है generic code. What is a generic code? A code जो किसी भी language specific नहीं है, ना ही C, Java, C++, Python, किसी भी language में नहीं लिखा गया है. It is just a set of instruction, जैसे कि आपको इस वाले example में दिख रहा होगा, right? In this example you can see it is just an set of instruction. अब इस generic code में सब कुछ होता है, starting with your logical operator, bitwise operator, शिफ्ट ऑपरेटर, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक. सो दीज आर द काइंड ऑफ कोड्स दैट आर आस्क्ड, ऑफन आस्क्ड इन केप जेमिनी, ठीक है. ये एक जेनरिक कोड है. मूविंग अहेड वी ऑल्सो गेट कोड स्निपेट, मतलब इट इज़ लैंग्वेज स्पेसिफिक. जैसे कि अगर ये कोड देखोगे, दिस इज सी लैंग्वेज में ये कोड को लिखा गया है, सो दिस इज अ लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड. These kind of code also come in CAPGEMINI and these are known as code snippet. छोटे छोटे कोड को code snippets बोलते हैं. वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, वो C हो, C++ हो, Java हो, Python, anything. Majorly Python से नहीं आता है. They stay restricted till C, C++ and Java. ठीक है. So these are the kind of question that you get. Apart from these और क्या आते हैं? You get loop question. अब वो loop question generic code में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे example में show किया गया है do while, या फिर इट कैन ऑल्सो बी इन अ नॉर्मल कोड स्निपेट, नॉर्मल फुल फ्लेजेड कोड लिखा है एंड देर इज अ फॉर लूप, राइट. सो लूप काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी देयर. वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर हो गया, एनी काइंड ऑफ लूपिंग क्वेश्चन, मे दैट बी इन जेनेरिक कोड और मे दैट बी इन नॉर्मल कोड स्निपेट, कहीं पर भी पर लूप से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको ढूंढना पड़ता है कि हाउ दिस लूप इज एक्चुअली फंक्शनिंग. क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में क्लू है विच कैन हेल्प मी सॉल्व फास्टर. हमेशा लुक फॉर द क्लू. देर इज सर्टन क्लू दैट हैज़ बिन पुट इन टू द क्वेश्चन, राइट, दैट यू कैन ऑफ कोर्स सॉल्व इट विद इन 1 मिनट टाइम. मूविंग अहेड, दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो है इफ एल्स, राइट. इफ यू लुक इन टू दिस क्वेश्चन, दिस सेज
if else kind of a question. So if else is also a part of CAPGEMINI. वो बहुत सारे if else देते हैं, like this is a complete code that is written in if else. It might so happen that you get generic code, not code snippets, right? So if else is a part where you need to understand कि if कैसे function करता है, if कहाँ function नहीं करता है, right? What is the use of continue, break, ये सारे terminologies यहाँ पे आते हैं, right? Apart from this, there are certain other topics that you need to focus on, like switch case हो गया, bitwise operator, arithmetic operator, logical operator, relational operator. Like these are the part of the precedence table. You need to know the precedence table in depth, right? So apart from that, we also have certain things like the database management system, DBMS. हमको ये पता होना चाहिए कि DBMS में होता क्या है. Like we need to know certain questions related to joins, certain things related to view, transactions, normalization. कुछ छोटे छोटे concept हमें आने चाहिए, right? That is from database management system. When that comes to operating system as another topic, जो बहुत ही least पूछा जाता है पर पूछा ज़रूर जाता है कभी कभार, right? So you need to know like what is an anomaly, process क्या होता है, how does it function, and what are the different algorithms that are there, what is a deadlock. So these kind of things are all accumulated under operating system, which you need to know in specific, right? Apart from these general topics that we do have topics like shift operator. It is again a part of the precedence table. You can see this shift operator is again written inside a code snippet. ये full-fledged code है, right? It can also be used in some generic codes. It's not necessary that shift operator will always be used in a proper code. ठीक है? तो these are the kind of places from where you should prepare. Apart from this, this is an example that has been set for the comparators. You can see equal, right? This equals to symbol. So this is a comparator again put inside a proper code snippet, right? So you need to know the functionality कि ये करता क्या. What does double AND do? What does double OR do? What does an XOR do? What does a bitwise AND does? What does a comparator does? What is the difference between a comparator and assignment operator? So you need to know all of these things. Apart from that, there is a very basic part where CAPGEMINI focuses, and that is data structure, right? This is a very simple kind of a question that has been given, and this was probably asked in one of the exams. So data structure is such an area. If you really see the last year CAPGEMINI question, the major chunk of question was asked from data structure. ऐसा नहीं कि it was asking you a very high level question, but बहुत ही minimalistic way में they have framed question on concept based, on logic based, and that is how they have represented the entire thing. अगर आपके fundamentals of data structure are clear, you can solve these questions. It doesn't take much time. Apart from that, we have we do get question related to computer networking, because they have certain things that works on computer networking. So they just try to check how good, how much acquainted are you, आपको कितना पता है in terms of networking. So they give you really very simple kind of a question. तो आपको एक basic average knowledge होना चाहिए that what is computer networking, right? And what are the different types of the OSI layers, model, और different layer में different काम क्या करता है, what is a bus, what is a router, and there are different questions, short question that comes related to the computer networking part of pseudocode, right? So these basically come as a fill in the blanks. वहाँ पे आपको कोई कुछ निकालने को नहीं बोलता. They don't ask you to find out the subnet mask and all IP addresses. They rather give you a fill in the blanks where you need to fill a proper word that actually makes sense while completing the statement, right? Moving ahead, you do get this part, which is really interesting क्योंकि this is strings, right? Now string is there everywhere, C, C++, Java. So string comes up to be the most powerful topic up after DSA. So string can be asked in generic code, string can be asked in a full-fledged code snippet. So accordingly, be prepared for understanding what these strings do, right? So with this much if you prepare, starting with generic code till the strings, this is an ample amount of things that you must know before entering your CAPGEMINI exam.
Capgemini exams are really easy only if you know how to manage time and as fast as you can understand the logic and what the question is trying to ask you. It's not a difficult test, it's a very simple test. Apart from that, the news that I have is we have recently launched the Capgemini course on the Campusmonk app. So if you are really looking forward to crack this examination, you can download this app and go to the course section and purchase this course on Capgemini, where we will be teaching all the topic wise questions. There will be a lot of questions, there will be a lot of ways in which you can understand, analyze a question and find the answer in the least possible time. This app is available for both Play Store and App Store. The link is in the description, so don't miss out. The Capgemini exam is just around the corner. Go grab your chance to learn something new, how quickly you can actually evaluate yourself. There will be mock tests where you can understand where you scale up to, where you stand. And apart from that, of course, you can enhance your skill from these sessions that there will be, where you will learn the generic code snippets, strings, and even you will learn each and every topic that we have discussed just a few minutes ago. You will understand how the questions are framed and what way can you solve them. So without wasting much time, we have already launched this course on the Campusmonk app. Do go and check it out. And I will see you next time. Until then, keep preparing. All the best. Keep learning. Thank you.